भुन चुका है और अब हम इस पॉइंट पर इसमें शामिल कर दें तो चिकन चिकन को शामिल करते हुए इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है वो अच्छे से भून लें तो ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से चिकन में रच बस जाएं और वो ये तो जो स्मेल होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। देखिए यहाँ पर चिकन जो है वो अच्छे से भुन चुका है और अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं आलू और आलू शामिल करके भी इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट भून लें तो इसकी प्रॉपर रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उधर से आप इसकी प्रॉपर रेसिपी जो है वो देख सकते हैं। बस अब इसको भूनना है और इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसमें पानी डाल दीजिएगा और हमारा आलू गोश्त का सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। ये है जी सालन तो फाइनल लुक तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और अब मैं जल्दी से चपातियाँ तैयार कर लूँ थी और हस्बैंड आ चुके हैं। अब हम अपना डिनर इंजॉय करें थे और फिर मैं आपको अपने साथ बाहर ले तो चलती हूँ। मेरा थोड़ा सा सामान रहता था ग्रोसरी का वो मैंने आज बाय करने जाना है तो आप भी मेरे साथ ही चलिए।
जी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ तो आपको मेरी आज की वीडियो रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो जो जो चीज़ें मैंने बाय की हैं। दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा फिर हाज़िर होंगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।